StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल स्टडीज़ का ओवरलैप जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और ये इतना सिग्निफिकेंट है कि आप अगर स्पिल ओवर देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का और जीएस पेपर्स में, सो ये कहा जा सकता है कि आप ऑलमोस्ट एक पेपर को पूरा या कई सारे पेपर्स में भाग को अगर कंप्लीट करके हम जोड़ें तो एक पेपर को पूरा ओवरलैप करके कवर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ पेपर्स में इवन 40-50% तक जो सिलेबस है वो मैच कर जाता है। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस लुक कि पेपर 1 से लेके पेपर 5 तक, एसए से लेके जीएस 1 से 4 तक कितना ओवरलैप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट विद जीएस, और इसको लेके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सो पेपर 1 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एसए पेपर, कुछ टॉपिक्स जो रीसेंट समय में आए हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के लिए ईजी हो जाते हैं डील करने के। अब ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि 100% एक ही सब्जेक्ट से आ जाएगा। ऐसे में तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए ही चाहिए, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टूडेंट है वो जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वर्किंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी है, डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को जब जानता है, सो ही और शी इज बेटर प्लेस टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ essay paper. So ship in the harbor is safe, but that is not what ship is for. So that can also be taken as metaphor for the administrative development and development administration. The planning we do, the developmental activity that bureaucracy takes, and to uplift the society, to uplift the country, and also other aspect related to the ministries, to the departments, right? Entrepreneurship aspect of the government. There are better practices to best practices. So again, in governance, in good governance, then in e-governance, then from government to governance, then from maximum governance and minimum government, there could be better and better ways to deal with the problems of the society, better and more refined ways to deal with the challenges of unemployment, of underdevelopment, of law and order situation. It could be taken in that aspect. Biased media is a real threat to Indian democracy. So now there is specific topic, role of media in public administration, role of media. And that is related to particularly development. But when we study role of media, we also study it with interconnections that we have related to security aspects, related to bringing legitimacy to the government, related to diffusion of the policies, related to acceptance of the policies by the people. And so that is something that can be tackled with some basic idea. Impact of new economic measures on fiscal ties between union और states. अब finance के relations के बारे में है, तो हम पेपर 2 में ये पढ़ते ही हैं स्टेट और सेंटर के finance के relations को। साथ में if development is not engendered, it is endangered. So ये role of women in development and women, self-help groups and development of women. These are the topics that we cover in the paper 1 of public administration, right? And digital economy, a leveler or a source of economic inequality. So now e-governance and issues related to it. E-governance, techniques of better management, ये सब we study in paper 1 of the public administration. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, या पिछले साल ही क्वेश्चन आया था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में है, ये बून है या फिर बेन है, ये एक अलग से टॉपिक ही हम पढ़ते हैं पेपर 1 में भी। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
कितने मॉडल्स होते हैं, क्या इनके इश्यूज हैं, रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है बेटर करने के लिए, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, लूप होल्स हैं, उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी है. वी डू स्टडी, राइट. एंड सो बाय द वे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल का जो नेक्स्ट बैच है दैट इज स्टार्टिंग ऑन 24th of July. So you just have to ensure that you use SC live code. SC live code का आपको उपयोग करना है और मैक्सिमम डिस्काउंट ले लेना है. So ये 1 to 4 PM पे रोज क्लासेस होती हैं लाइव. आपको इसमें 12 टेस्ट मिलेंगे जिसमें कि आपके 8 सेक्शनल होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे. साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाता है. सो डू इंश्योर दैट यू यूज SC लाइव कोड एंड अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट. रिमेंबर 24th of July. नाउ पेपर 2 GS1. सो देखते हैं यहां पर जो टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं. सो रोल ऑफ वीमेन, जैसे मैंने बताया कि वीमेन एंड डेवलपमेंट टॉपिक ही है पेपर 1 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के. सो वीमेन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ वीमेन कैसे काम कर रही हैं, साथ में पॉवर्टी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम पढ़ते हैं. कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 में, ये सारी चीजें पढ़ते हैं. इशू, चैलेंजेस, अर्बनाइजेशन. देन इन पेपर 2 वी हैव अर्बन गवर्नेंस से रिलेटेड चैप्टर. सो व्हाट आर द चैलेंजेस, how urbanization is changing the facet of economy, or for that matter what are the challenges. जैसे अगर बात करें तो recently we have seen due to pre-monsoon showers और monsoon कि हमारे urban areas में बहुत water clogging ऐसी घटनाएं होती हैं, या अर्बन जो गवर्नेंस है उसका बहुत ही स्टैंडर्ड क्या है, खराब है. कुछ जगहों पर चेंज भी हुआ है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स भी आए हैं. हम स्वच्छता भारत में इंदौर जैसी जगहों की भी बात करते हैं. होल ऑफ अ यूनिट डील्स विद अर्बन गवर्नेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देन अगेन पेपर 3 GS2 टॉपिक्स ओवरलैप विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इवोल्यूशन, फ्यूचर अमेंडमेंट्स के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, साथ में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स, साथ में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, इसके साथ आपका गवर्नर का ऑफिस, ये सारे के सारे टॉपिक्स वी कवर इन पेपर 2 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. देन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ministries and departments, constitutional, statutory, regulatory bodies, National Human Rights Commission type of bodies, then the regulatory bodies, be it SEBI, be it RBI, Director General of Civil Aviation. These kind of topics we do have in paper 2 of public administration. Then in different sectors of development, in different sectors of economy, we have specific policies for the development. So we do study in development administration about such intervention and role of bureaucracy and role of state. And when we study about planning and budgetary aspect, we do touch upon these topics. Aspect of governance, transparency, accountability, e-governance, that I already told you is a part of public administration syllabus. For an example, RTI, then accountability and control. There is a unit in paper 1 of public administration. Role of civil services in democracy, role of bureaucracy in development, and role of bureaucracy in democracy. Role of bureaucracy in development, in democracy. These are specific topic. Role of civil services in democracy. These are specific topic. Role of NGOs, self-help groups, civil societies, along with women. How do development and these institutions interact? Association, donor, charities. These all topics are covered when we cover the
paper 1 aspect, paper 1, there is a unit about development administration. Over there we do cover these topics. Then paper 4, GS3, topics overlap with public administration, disaster management. One of the biggest function, one of the most important function of district magistrate is also being an authority of disaster management at the district level. So we do study that disaster management in paper 2 of public administration. Planning and budgeting of the government, financial administration and financial management, these are separate units in paper 1 and paper 2. Then inclusive growth and effects of liberalization, privatization, globalization on the government, how government, state is dealing with these. Industrial policies, PSUs, and impact of industrial policies on PSU, public sector undertakings. We do study these topics also. Challenges to internal security, mandate of the various agencies at the state level and at the central level. For an example, NCRB, or for that matter, NCB, Narcotics Control Bureau, or for that matter, National Investigation Agency, NIA. We do study all this. Role of media, another very important topic. Role of media in development also is there, but it also is interrelated to role of media in security. These we do touch upon. Various security forces, be it central administrative, central paramilitary forces, or central armed police forces, state police, law and order administration. These are the topics that we cover in paper 2. So paper 5, GS4, ethics paper. Then there is public services, civil services, probity, transparency, conduct rules, ethics. These all are covered in public administration. Then you have the topic itself says public civil services, values and ethics in public administration. There is all about a talk about public administration. Then probity in government, in governance, idea of public service, probity, information sharing, transparency, RTI. These all topics are right to information over here. These all topics are already as a part of syllabus in public administration. Ethics, code of ethics and code of conduct, citizens charter, another important topic that we have in paper 1. Then effectiveness of service delivery, what are the issues, how bureaucracy works upon these issues, and what are the better models of the governance that we study. And then corruption and the institutional mechanism to deal with the corruption, be it Central Vigilance Commission or be it vigilance offices within the departments. So we do cover all these aspects into our public administration studies when we cover. So these were some of the areas that I tried to link with the public administration syllabus, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा. सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी मुद्दे को जानने के लिए, समझने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर पब्लिक एड बाय शेखर. और यहाँ पर काफ़ी जो करंट अफेयर्स की इश्यूज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आपकी कोई क्वेरीज हैं, साथ में डाउट क्लियरिंग के लिए कोई आपको मुद्दा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपका स्वागत है यहाँ पर. सो दैट इज ऑल वी हैव फॉर टुडे, एंड ऑन दैट नोट, जय हिंद, जय भारत. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.